Good morning, everyone. I heartily welcome you all for this open session on Law of Cheque Dishonor. My name is Trisha Srivastav and I'm the mentor for Judiciary Masterclass at Rostrum Legal. Before starting with this session, I would like to have a brief introduction about you all. So, anyone from the audience, whether in the portal or in the YouTube, if you're watching me, kindly please give your brief introduction so that I can know my audience. Anybody from the audience can do that. Just a brief introduction, who you are, from where are you, what you actually do, whether you're a practicing advocate or a student or a professor, whatever it is. Yes, anybody. People who are watching me from the portal, people who are watching me from the YouTube. Anybody can. Just come and, introduce yourself. See, it's a live interaction. It's an interactive session. So it's good that we know each other so that the interaction during the course of the session becomes easy. Yes, Swati was writing something. Swati has deleted, I guess. Hello, Swati, you were writing something? Yes, guys, anybody can do that. Oh, hello, Avinash, and welcome to the session. So, you are a student or you teach there? Hello, Devapriya. Yes, Avinash, do you teach there? You are a professor or you are a student? And Devapriya, what about you? What do you do? Hello, Roshni. Okay, you are a second semester student. Very good. Hello, Rupali. And you're from which law school, Devapriya? How are you, Rupali? How are you doing? Hello, Akshita. How are you? How are you doing? The only purpose of getting an introduction with you all is that the purpose of this open session is we are going to have an interactive session. जैसे हम एक क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, so we are going to have the same interactive session so that in the course of the session, if you want to ask some question or if you want to have an interaction with me, we can have a free flow of communication between ourselves. Oh, very good, very good. Very good, Dilopriya. Welcome. I heartily welcome all of you who have written here and who are online watching from the YouTube and from the portal. So the today's session, the today's topic for the open session is law of cheque dishonor.
And since we are actively engaged in the preparation of judicial services exams of almost all the states, the check dishonor is a kind of a subject which is common in almost all the services exams of all the states examination for the civil judge examination. And that is why I have chosen specifically this topic so that you can get an idea as to what is the nature of the law of check dishonor, what kind of questions can come from this topic in the examinations, and also how you can benefit out of it. I have also tried to give you in this entire presentation, you will also find that I've tried to give a practical aspect because I'm also a practicing lawyer here in Chhattisgarh. So I have also attempted to give a practical exposure with regard to the law of check dishonor. So even this is not only applicable, this is not going to be applicable only to these law students for their law course for their 5 years or 3 years law course, also to the students aspiring for the civil judge examinations and also for the practicing lawyers. So let's start with the topic. So the first question which should arise in our mind is what is check? And the definition of check obviously is given in the Negotiable Instrument Act in section 6. So we need to understand what is check. I'm reading the definition, then I'll give the explanation. So section 6 of the Negotiable Instrument Act 1881 defines check as a bill of exchange. So this thing is important to note. A check is a bill of exchange. A check is in the nature of a bill of exchange, drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and includes electronic image of truncated check and check in electronic form. Now, let us forget these 1 and 2 point that it includes electronic image of truncated check and check in electronic form. This is something which I will explain later. But let's first try to understand what is check. Now, section 6 very specifically says that the check is a bill of exchange. Now, what do we mean by bill of exchange? So we all know that the Negotiable Instrument Act 1881 deals with 3 kinds of negotiable instrument. So the first one is promissory note, second one is bill of exchange, and the third one is check. The promissory note is a kind of an unconditional undertaking which a person gives to another person that on certain date I will pay a certain person certain amount of money. Now this involves only two persons. The promissory note involves only two persons, that is the drawer and the payee. The drawer is a person who draws the promissory note, and he is giving the unconditional promise. He is giving an unconditional undertaking to the payee that on certain date I will pay you or to a certain person to whomsoever you will direct me to pay a certain sum of money which I have specified in this promissory note. So the promissory note is a kind of a contract where there is an unconditional promise from the drawer to the payee for the payment of the money. Second is a bill of exchange. Bill of exchange is a kind of a negotiable instrument where the drawer, which involves three parties at least. One is the drawer who draws the bill of exchange. The other one is the drawee or the acceptor, जिसके ऊपर हमने वो bill of exchange draw किया होता है. And the third one is pay, जिसको हमको actually में उसके अंदर payment करना. So drawer draws a bill of exchange, giving an unconditional order. Now see the difference. In bill of exchange, the drawer is giving an unconditional order to the drawee to make the payment of certain amount to pay or to certain person to whom the pay will give the directions for making the payment. Now the question is, why will some person will make the payment of money on my behalf? This is the question. So to answer this, let us try to understand an arrangement. Suppose, for example, I entered into a contract. I executed some sale transaction, say for example with Mr. A. Now Mr. A has to make me the payment of rupees 20,000. I executed the sale transaction on credit, which means that the amount of goods which I have sold to Mr. A was required to be paid by Mr. A to me on certain date, say for example after 1 month or 2 months. Now after 1 month or 2 months, I have to also make the payment. I also have certain liabilities towards some person, so I have to make the payment of rupees 20,000 to, say for example, to Mr. B. Now I do not have immediate cash. Now I am executing a current transaction with Mr. B. I am purchasing certain items from Mr. B. I am purchasing some goods from Mr. B, but I do not have the cash to make the payment. What I will do, I will draw a bill of exchange. I will draw a bill of exchange giving an unconditional order to Mr. A
that after 2 months the amount of money which we are about to make about to pay to me should not pay to me, but instead under this bill of exchange should pay to Mr. B. So that is why, since the drawee always have certain amount reserved of the drawer can obviously ask the drawee to make the payment to the other person, that is to the pay. So in this case, in this arrangement, I am the drawer of the bill of exchange. Mr. A is the drawee because I am drawing the bill of exchange on him, directing him that after 2 months जो पैसा आप मुझे देने वाले थे मुझे ना देके आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मिस्टर बी को दें। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके मैंने कैश के इक्विवेलेंट इस अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने मिस्टर बी को दे दिया। अब बी ने जो मुझे सामान बेचा उसके लिए एक वैलिड कंसिडरेशन बी को पास हो गया, राइट। अब बी उसमें से जो 20,000 रुपए मैं मिस्टर ए से कलेक्ट करता क्योंकि मैंने उनको कुछ सामान क्रेडिट पे बेचा था, तो अब वही अमाउंट मिस्टर बी मिस्टर ए से कलेक्ट करने के लिए इंटाइटल्ड। तो इस किस्म से नॉर्मल जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेड जो होता है, इसको रेगुलर इसमें कैश फ्लो रखने के लिए, अगर मान लो कैश नहीं भी है तब भी व्यापार ना रुके, ट्रेड ना रुके, सो एज टू इंश्योर दिस द कंसेप्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज डिवाइस्ड। Now, when we say that check is a bill of exchange, then we need to understand how the check is bill of exchange. तो अब मैंने आपको बताया कि bill of exchange में 3 पार्टीज होती हैं, drawer, drawee and pay. तो ड्रॉर वो व्यक्ति होता है जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, ड्रॉई वो व्यक्ति होता है जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पे को पेमेंट करता है, जो यहाँ पे मिस्टर ए था, और पे वो व्यक्ति होता है जिसको पेमेंट किया जाना है, जो यहाँ पे मिस्टर बी है। तो अब हम समझते हैं कि जो ड्रॉई है, अगर मान लो वो बैंक होता तो क्या होता, अगर वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता तो क्या होता, जैसे स्टेट बैंक है, HDFC बैंक है, आपका क्या कहते हैं ICICI बैंक है, मैंने कोई चेक ड्रॉ किया क्योंकि मेरा क्या कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, मेरा पैसा वहां पे रखा हुआ है। तो अगर मान लो अभी इमीडिएटली मुझे कैश की जरूरत है, या अभी अगर इमीडिएटली मुझे किसी को कैश पेमेंट करना है, मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा। I will do the transaction, I will definitely execute the transaction, but how I will do it? I will do it by executing a check. I will draw a check on the State Bank of India, directing by this check the State Bank of India to make the payment of the amount of rupees 20,000 from my account to Mr. B. तो ये चेक है, इस चेक का पूरा जो सेटअप होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है, इसीलिए सेक्शन 6 में कहा गया है कि चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई द चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। Simply reading the definition is not going to explain us the fact as to why the check is bill of exchange. So check also involves 3 parties. One is the drawer, that is the drawer of the check. The other is a drawee bank, जिसमें से हमको पैसा निकालना है. And the third one is the person who has to be given the payment, that is the pay. So यहाँ पे भी bill of exchange की तरह 3 parties होती हैं, इसलिए check को भी हम bill of exchange बोलते हैं। तो check primarily bill of exchange ही होता है। Now let's come to the later part of the definition of check, which says that check includes इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब देखिए सेक्शन 6 में भी बहुत क्लियरली दिया हुआ है दैट चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। तो अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे ड्रॉई की जगह आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रख दो तो वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज चेक बन जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। Now, the later part of the definition in section 6 states that the check includes, now it's an inclusive definition, it's not an exhaustive definition, so it includes electronic image of truncated check and check in electronic form. Now, we need to understand what is the meaning of the expression electronic image of truncated check. तो अब दोस्तों इस बात को देखो कि जब हम चेक को पेमेंट के लिए लगाते हैं बैंक में, तो जब चेक को पेमेंट के लिए बैंक में लगाया जाता है तब उसका क्लियरेंस होता है, तो एक क्लियरिंग हाउस बनाया जाता है विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर मान लो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई चेक लगाया, अगर अकाउंट पे ही चेक था जिसमें से मेरे को पेमेंट रिसीव होना था और वो जो चेक ड्रॉ किया गया वो HDFC बैंक में किया गया, तो मैं अपने क्या कहते हैं किसी ने अगर मेरे को अकाउंट पे ही चेक दिया है तो अब वो चेक के अंदर मुझे पेमेंट कैसे होगा, जिसने भी मुझे चेक ड्रॉ करके दिया उसका अकाउंट है HDFC बैंक में, मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक में, तो अब उस चेक के अंदर मुझे पेमेंट कैसे मिलेगा, तो उस चेक के अंदर मुझे पेमेंट मिलेगा कि जब भी कोई चेक डिपॉजिट करेगा तो पहले मेरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस चेक को क्लियरिंग हाउस भेजेगा। क्लियरिंग हाउस में ये पता चलेगा कि क्या जिस व्यक्ति ने ये चेक ड्रॉ किया है HDFC बैंक के लिए, तो क्या उस HDFC बैंक में उस व्यक्ति का अकाउंट है, अगर अकाउंट है तो क्या उसमें उतना पैसा है जितना चेक से उसके लिए क्या कहते हैं पेमेंट किया जा सके, अगर ऐसा है तो चेक क्लियर हो जाता है। इस क्लियरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इस चेक को की जो स्कैन्ड कॉपी होती है, एक इस चेक की स्कैन्ड कॉपी बनाई जाती है जिससे कि इसका जो फर्दर फिजिकल मूवमेंट है इसकी अब जरूरत नहीं होती। अब हमको हार्ड कॉपी ऑफ चेक की जरूरत नहीं, क्योंकि अब बैंकर ने क्या कर लिया क्लियरेंस के पर्पज से
उस चेक की स्कैन कॉपी कर लिया, उस स्कैन कॉपी को एचडीएफसी बैंक में भेजा जाता है। एचडीएफसी बैंक वाले कंफर्म करेंगे कि हाँ भैया जिस व्यक्ति ने एचडीएफसी बैंक पे ये चेक ड्रॉ किया है उस व्यक्ति का अकाउंट हमारे यहाँ पे है और उसमें पर्याप्त पैसा है, इतना पैसा तो है कि इस चेक का अमाउंट उसमें से हम काट सकते हैं। तो ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब हम बोलते हैं चेक क्लियर हो गया, और जब चेक क्लियर हो जाता है तब हमारे अकाउंट में पैसा आता है। तो इस तरीके से एचडीएफसी बैंक से अब स्टेट बैंक में वो पैसा आ जाएगा, क्योंकि स्टेट बैंक ने इस चेक को एचडीएफसी बैंक को भेजा था क्लियरेंस के लिए। ये अगर हमको बात समझ में आ गई तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि ट्रंकेटेड इमेज जो होती है उसका मतलब होता है कि चेक की स्कैन्ड कॉपी जब स्टेट बैंक कर लेगा या जो भी बैंक जिसपे हमने चेक जमा किया, क्लियरेंस के समय, क्लियरेंस का जो प्रोसेस होता है उसके समय जब इस चेक की कॉपी को स्कैन कर लिया जाएगा तो इसकी स्कैन्ड कॉपी इसके फर्दर फिजिकल मूवमेंट को, जो हार्ड कॉपी इसके फर्दर फिजिकल मूवमेंट की अब जरूरत नहीं होती, अब इस स्कैन कॉपी से ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड इमेज, सॉरी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक। और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब कि फिजिकल फॉर्म का चेक नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक चेक है जिसको बनाया भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से किया था और इसको नेगोशिएट भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से किया जा रहा है, मतलब इसमें आपका पेपर चेक इन्वॉल्व नहीं होता है। Now what does explanation 1 says? Explanation 1 says that a check in electronic forms means a check drawn in electronic form by using any computer resource and signed in a secure system with digital signature, with or without biometric signature, and asymmetric crypto system or with electronic signatures as the case may be. Lots of technical terms. How to understand it? See what the explanation A of what clause A of explanation 1 is trying to explain us or trying to tell us is कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक का क्या मतलब होता है। तो मैंने अभी आपको बताया ऐसा चेक जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट किया जाता है। ऐसे चेक में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब भी हम कुछ करते हैं तो वो हमेशा एसिमेट्रिक क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन की तरह होता है। अब इसको हम कैसे समझे, एसिमेट्रिक क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि कोडेड लैंग्वेज में आप इसको समझ लो, इसको मैंने कोड कर दिया और जिस व्यक्ति को मैं ये भेजूंगा उसको मैं एक की भेजूंगा जिसके तहत वो उसको डिकोड कर सकेगा। तो मैं एक चेक बना रहा हूं और दुनिया को ना मालूम पड़े कि ये चेक है, इसलिए मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी मशीन लैंग्वेज से इसको कोड कर दिया। अब इसकी एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। प्राइवेट की से मैंने इस चेक को कोड कर लिया और एक इसकी पब्लिक की जो मुझे सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, तो वो पब्लिक की के साथ मैं इस कोडेड चेक को कहाँ भेजूंगा, मैं जिस व्यक्ति को भेजना चाहता हूँ, जिसको मैं चेक इशू करना चाहता हूँ उसको मैं भेज दूंगा। और वो व्यक्ति इस बात की जानकारी करने के लिए कि हाँ भैया ये चेक ही है, उस पब्लिक की से मेरे द्वारा कोड किए गए उस चेक को डिकोड करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा कि इसमें जो कंटेंट है वो चेक का ही कंटेंट है और किसी चीज का कंटेंट नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन, जिससे दुनिया को ये ना मालूम पड़े कि इलेक्ट्रॉनिकली मैंने क्या लिखा, राइट। तो पहली चीज तो हो गई। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, ट्रंकेटेड चेक मैंने अभी आपको बताया मींस अ चेक व्हिच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल either by the clearing house or by the bank, whether paying or receiving payment immediately on generation of an electronic image of transmission, substituting further physical movement of the check in writing. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जब चेक को क्लियरिंग हाउस भेजा जाता है वहां पे इस चेक की इमेज की एक स्कैन कॉपी बनाई जाती है। Now this scan copy is the truncated image of the check. Now this substitutes the further physical movement of this hard copy of the check. Now this is what we mean by truncated check. Is this point clear? यहां तक सबके समझ में आ रहा है? यहां तक सबके समझ में आ रहा है? To everyone who is online. Is this clear to everyone? यहां तक सबके समझ में आया चेक की डेफिनेशन, ट्रंकेटेड इमेज ऑफ चेक क्या होता है और क्या कहते हैं चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में आए। चलिए, now what does explanation 2 says? Now explanation 2 is about the definition of the clearing house। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस क्लियरिंग हाउस को स्टैब्लिश करता है ताकि अकाउंट पे चेक या और भी किसी चेक का क्या कहते हैं क्लियरेंस हो सके, तो उसको हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। एंड एक्सप्लेनेशन 3 इज अबाउट द एसिमेट्रिक क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जो डेफिनेशन है विल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू देम इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो अभी मैंने आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया है।
Now we come to the concept of post-dated check. Now it always happens during the course of transactions. For example, if I have to obtain the loan of rupees say very small amount, say for example rupees 20,000, अब 20,000 का मैं अगर किसी से पैसा उधार ले रहा हूँ तो कोई उसके लिए मेरे को कोई संपत्ति उसके लिए गिरवी थोड़ी रखनी पड़ेगी. 20,000 बहुत ही मेगर अमाउंट है, बट माय फाइनेंशियल कंडीशन इज सच दैट आई कैन नॉट इमीडिएटली put something as security for this 20,000 rupees. So how to ensure अब normal course of transactions में इन चीजों को उतना महत्व भी नहीं दिया जाता कि हाँ भैया मैं छोटे मोटे अमाउंट का उधार ले रहा हूँ तो वो पेमेंट नहीं हुआ तो कैसे करेंगे. तो ऐसे ट्रांजैक्शंस में सिक्योरिटी के पर्पज से क्या किया जाता है कि एक ब्लैंक चेक या एक पोस्ट डेटेड चेक, जिसमें जैसे मान लीजिए आज मैं आपसे 20,000 रुपए की उधारी ले रहा हूँ इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन या इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, तो टू इंश्योर कि आपको मैं फ्यूचर में इसका पेमेंट करूंगा तो आपको मैं एक चेक ड्रॉ करके दूंगा. अगर मान लीजिए मुझे इस पैसे का पेमेंट एक साल बाद करना था, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे 1 जनवरी 2019 को कोई लोन लिया था तो एक साल इसमें खत्म होता है 31 दिसंबर 2019 को. So if I have to repay you this 20,000 rupees on 31st of December 2019 to ensure for the purpose of security, so as to ensure that you will be repaid this amount, I will issue a post-dated check of date 1st of January 2020 of the amount of rupees 20,000. Meaning thereby that in case if I fail to make the payment of rupees 20,000 to you, you will deposit this check in the bank and you will get deducted the amount of rupees 20,000 from my account to your own account. तो ये एक security के purpose से हम एक post dated check को draw करते हैं. Now what is the relevance of this post dated check? So as I've told you in section 6, I have explained it to you that check is a kind of a bill of exchange, which means कि इसमें bill of exchange के ही क्या कहते हैं arrangements रहते हैं. So the Honorable Supreme Court has also in the case of Anil Swane versus Gulshan Rai, and this is a leading case in this regard, so you can note it down in case if you want to. The Honorable Supreme Court has very categorically held that the post-dated checks are bill of exchange and they become check only on the date of maturity. So I have drawn the check on 1st of January 2019 to make the payment on 1st of January 2020. तो एक साल का पूरा समय है. ये मैंने ऐसा सिक्योरिटी दिया था कि जो 20,000 रुपए में इन कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन आपसे ले रहा हूँ उसको मैं 31 दिसंबर 2019 तक आपको लौटा दूंगा. इन केस अगर मैं नहीं लौटा पाया या मैं फरार हो गया या मेरी नीयत खराब हो गई कि मुझे आपको पेमेंट नहीं करना है, then in such a circumstance you can deposit this check with my banker so as to get the amount of rupees 20,000 deducted from my account. And in case if this check gets dishonored, then obviously you have the right to proceed under section 138 of the Negotiable Instrument Act. इतना सबके समझ में आया? Is this point clear to everyone? Now coming to the point of the check dishonor, now having understood the concept of check and post-dated check, let's come to the concept of dishonor of check. So the concept of dishonor of check is given in section 138 of the Negotiable Instrument Act. And it says that the offense of check dishonor occurs when the check is dishonored because the funds were insufficient in the account or the amount of check exceeded the credit arrangement with the banks, right? तो या तो आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं था कि जितने अमाउंट का चेक आपने काटा उतना पैसा सब पर्याप्त नहीं था. फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपए है और मैंने चेक काट के दे दिया 1 लाख रुपए का, तो ऑब्वियसली माय फंड्स my account is insufficient with funds, so this check cannot be honored. या जितना मैंने बैंक के साथ क्रेडिट अरेंजमेंट किया, क्रेडिट अरेंजमेंट मतलब कि हाँ भैया इतना उधार मुझे बैंक दे सकता है. अब मान लो बैंक मुझे सिर्फ 1 लाख तक का उधार दे सकता है और चेक मैंने 2 लाख का काट दिया, तो ऑब्वियसली क्रेडिट अरेंजमेंट से एक्सीड करता है. इसलिए जो 2 लाख रुपीस का जो अमाउंट होता है, जो 2 लाख का जो चेक आई हैव इशूड विल गेट डिसऑनर्ड फॉर द अमाउंट एक्सीडिंग द क्रेडिट अरेंजमेंट विद द बैंक. And the punishment which has been prescribed for this offense is the punishment of 2 years of imprisonment or fine which may extend up to twice the amount of check or with both. So this is the fact of this is with regard to the offense of check dishonor. Now what is the procedure which is adopted for the check dishonor? So the section 138 also very clearly states that the check must be presented to the bank within 3 months it is drawn unless until it is not a post-dated check. First. Second, if the check gets dishonored, then within 30 days from the date of dishonor, the holder or the payee of the check writes to make the payment of the check to the drawer. Now, if the check was issued to you and it gets dishonored, then it will be a duty to write to me within 30 days that I should make you the payment. And in that notice under 138, you will ask me, you will direct me specifically that I should make you the payment within 15 days. If after the issuance of this notice
and after the receipt of this notice, the 15 days expires, and I do not make you the payment of the check amount, then this will give you this will give rise to the cause of action for you to approach the court with a complaint. So the holder of pay on expiry of this 15 days is required to file a criminal complaint within 30 days from the date of expiry of 15 days. So as I've mentioned this in the slide as well, that on the expiry of this 15 days, the holder will have the cause of action to approach the court with a criminal complaint. So on the expiry of this 15 days, from the date of expiry of this 15 days, within 30 days, the holder of the pay will have to institute a criminal complaint in the court for the check dishonor. Now the explanation says that check is now the explanation about it is the debt must be legally recoverable debt or liability. The explanation of 138 says that the debt or liability which has been specified in 138, it should be a legally recoverable debt or liability. What does it mean? So we must understand that whatever three kinds of instruments have been mentioned in the Negotiable Instrument Act, whether it is check, bill of exchange, or promissory note, they are a kind of contract. So legally recoverable debt or liability means debt or liability valid under section 23 of the Indian Contract Act 1872. Is this point clear? Coming to the other portion now, with regard to the offenses by the company, since we are dealing with the substantive offense of check dishonor. So if the check dishonor has been if the offense of check dishonor has been committed by a company, if the person accused of the offense of check dishonor is a company which is a body corporate separate from its shareholders, so the accused in such cases will be company as well as all the office holders, that is manager, secretary, or other office bearers of the company who were in charge of and responsible for the conduct of the administration of the company. They both, the company and all the office bearers, shall be deemed to be guilty of the offense of check dishonor. But yes, there are certain defenses which these persons can take, and those defenses include that the accused office bearer needs to prove that the offense was committed without his knowledge. That is, the check was issued either without his knowledge or he adopted all the due diligence to prevent the commission of the offense. He made sure on his part, he made all the endeavors possible to ensure कि ये चेक डिसऑनर ना हो, पर उसके बाद भी अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तब उसकी लायबिलिटी नहीं होगी. Otherwise, it will always be deemed he will always be deemed to be a guilty along with the company. या आपका जो सबसेक्शन 2 है वो ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी के जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं वो कभी भी चेक डिसऑनर के ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट किसी भी कोर्ट में नहीं किए जा सकते. तो ये दो डिफेंसेस जो व्यक्ति होते हैं किसी कंपनी से एसोसिएटेड, अगर वो कंपनी के ऊपर चेक डिसऑनर का एलिगेशन है तो उसके जितने भी मैनेजर, सेक्रेटरी और ऑफिस बेयरर जो उस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल देते हैं विल बी रिस्पांसिबल फॉर द ऑफेंस ऑफ चेक डिसऑनर एंड दे शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी लीगली. But the defense which they can take is that the offense of check dishonor was committed without their knowledge. That is, either the check was issued without their knowledge, or they made sure at the time of the issuance of the check they ensure all the due diligence that so as to prevent the commission of this offense of check dishonor. Is this point clear? Now there is a leading case law in this regard of Anita Hadar versus Messrs. Godfrey Travels and Tours Limited. Now in this case, the Honorable Supreme Court has very categorically said that the offense of partnership, in case of the check dishonor being committed by a partnership firm, the partner alone cannot be made liable. हाँ, ये हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म लायबल है फॉर द ऑफेंस ऑफ चेक डिसऑनर, बट अगर जो डिफेंसेस सेक्शन 141 में दिए गए हैं, अगर उन डिफेंसेस को प्रूव कर दिया गया है तो पार्टनर को उस चेक के डिसऑनर के लिए लायबल नहीं बनाया जा सकता. दिस इज व्हाट हैज बीन हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अनीता हादर वर्सेस मेसर्स गॉडफ्रे ट्रैवल्स एंड टूर्स लिमिटेड. Now, talking about the procedure to be adopted in case of check dishonor, so we need to see in section 148, 142 of the negotiable instrument that the cognizance of the offence has to be taken on the basis of a complaint in writing. We all know that there are two modes of institution of a criminal complaint. One is by institution of an FIR under section 154 of the CRPC, and the other one is by the institution of the complaint under section 200. So both are the modes by which the court can take the cognizance of an offence under section 190 of the CRPC. Having said that, in case of check dishonor, there cannot be an FIR under section 154. You will always have to, within 30 days from the expiry of the 15 days time period, within 30 days the complainant will have to institute a criminal complaint under section 200 of the CRPC and with respect to the offence of check dishonor under section 138 of the NI. Now the complaint has to be made within 1 month, as I have told you, within 30 days from the date of the expiry of the 15 days, because of 15 days के बाद आपको cause of action मिल रहा है. And
तो अगर आप उस एक महीने के अंदर कंप्लेंट नहीं भी फाइल कर सके तो प्रोवाइसो ऑफ क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 152 कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को भी एडमिसिबल बनाता है। मतलब कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन आप दे सकते हो और अगर सफिशिएंट कॉज शो किया है तो कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी कंप्लेंट को भी एक्सेप्ट कर लेगा इवन दो इट इज आफ्टर 1। Now, the court which will try the offence of check dishonor is the Court of Judicial Magistrate of the first class. So, this is the prescribed court for the prosecution of the offence of check dishonor. Which court will have the jurisdiction? So, with regard to jurisdiction, the courts which are entitled to take up this offence of check dishonor is in case of account paid check. अगर वो branch the branch of bank where the PO holder in due course as the case may be maintains the account is situated. तो जिस भी जगह पर जो पेई का जो अकाउंट होल्डिंग बैंक होता है जहां पे वो सिचुएटेड होता है उस बैंक की जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट के पास उस केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन होगा अगर वो अकाउंट पे चेक है तो। अगर वो अकाउंट पे चेक नहीं है तो द ब्रांच ऑफ द ड्रॉइंग बैंक से द ड्रॉअर मेंटेन्स द अकाउंट इज सिचुएटेड। तो जिस जगह पे ड्रॉअर का बैंक सिचुएटेड होता है अगर वो अकाउंट पे चेक नहीं है तो जिस जगह पे ड्रॉअर का बैंक सिचुएटेड होता है उस जगह की जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट के पास इस केस को ट्राई करने का अधिकार होगा। और अगर अकाउंट पे चेक होता है तो जहां पे पे या होल्डर जिसका भी क्या कहते हैं बैंक होता है उस बैंक की जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट के पास उस केस को ट्राई करने का अधिकार होगा। Now what will be the procedure for trial? Now continuing with the procedure for trial, section 143 of the NI Act says the prosecution for the offence of check dishonor to be conducted in accordance with the procedure for summary trial under criminal procedure code. हमें मालूम है 4 किस्म की ट्रायल होती हैं, सेशंस ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन्स ट्रायल, समरी ट्रायल। चेक डिसऑनर के केस में हमेशा समरी ट्रायल ही किया जाएगा और समरी ट्रायल अगर अपन कर रहे हैं तो उसमें मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस के लिए एक साल से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकता और 5,000 से ज्यादा का फाइन अमाउंट नहीं इम्पोज कर सकता। पर अगर मान लो मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि 1 साल से ज्यादा का पनिशमेंट देना है क्योंकि चेक डिसऑनर के लिए सिर्फ 2 साल की पनिशमेंट का ही प्रावधान है, अगर 1 साल से ज्यादा की पनिशमेंट देनी है या 5,000 से ज्यादा के फाइन को इम्पोज करना है तब उसको सेक्शन 260 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी में प्रोसीजर का नेचर चेंज करना होगा फ्रॉम समरी ट्रायल to any other trial given there, that is sessions trial, warrant trial or summons trial. Sessions trial तो सिर्फ उन मैटर्स में होती है जो एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं, इसलिए मोस्टली अगर मान लो 260 क्लॉज 2 का इस्तेमाल कोर्ट अगर करता है टू चेंज द नेचर ऑफ ट्रायल just because of the fact कि merely because of the fact कि the amount of punishment which has to be imposed should be more than 1 year, so the magistrate can adopt either the procedure of warrant trial or he can adopt either the procedure of summons trial. Now, this trial has to be completed within 6 months from the date of the filing of the complaint. Coming to the power of to award interim compensation. Now, this provision 143A, this section 143A has been inserted by the Amendment Act of 2018, and this was due to the fact of Make in India. There was a scheme, of the current government at the center with regard to speeding up the process for doing the business, and this amendment was in accordance with this. So it states that whenever a complaint of check dishonor is filed, then within 60 days the accused will have to make, the court can order the accused to make the payment of the 20% of the check amount to the complainant, so that उसका flow of cash नहीं रुके। अब ये directions court कब issue कर सकता है? तो अगर मान लो कोर्ट ने summary trial का procedure adopt किया है तो जब accused नॉट गिल्टी प्लीड करता है तब उस केस में उस स्टेज पे क्या कहते हैं 20% ऑफ द अमाउंट को कंप्लेनेंट को पे करने का ऑर्डर दे सकता है। देखिए समरी ट्रायल में चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं, इसलिए वहां पे डायरेक्टली उसको क्या कहते हैं सब्सटेंस ऑफ चार्जेस पढ़े जाते हैं, चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं। और अगर उससे पूछा जाता है कि वेदर डू यू एक्सेप्ट द चार्जेस अगेंस्ट यू, और अगर वो बोलता है कि आई डू नॉट एक्सेप्ट द चार्जेस अगेंस्ट मी, आई प्लीड टू I plead that my trial should be conducted, तो उस स्टेज पे अगर वो समरी ट्रायल का प्रोसीजर होता है तो उस स्टेज पे 20% का अमाउंट एज कंपनसेशन, चेक अमाउंट एज कंपनसेशन कंप्लेनेंट को देने के लिए कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। और अगर मान लो समरी ट्रायल का प्रोसीजर नहीं होता है, कोर्ट अगर समन्स या वारंट ट्रायल के प्रोसीजर पे चल रहा है, तो जिस समय चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं एक्यूज पे, उस वक्त एक्यूज को 20% ऑफ द चेक अमाउंट कंप्लेनेंट को देने के लिए बोला जा सकता है। ये अमाउंट उसको या तो 60 डेज में देना होता है, और अगर 60 डेज में नहीं दे पाया तो एट द मैक्स उसको 30 डेज और एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर इन केस अगर एक्यूज का एक्विटल होता है तो इसी अमाउंट को कंप्लेनेंट को वापस देने के लिए भी कहा जा सकता है।
and this amount is recoverable by the court as fine under section 421, और जो भी अमाउंट यहाँ पे अवार्ड किया जाता है उसको 357 सीआरपीसी में जो भी कॉम्पेंसेशन अवार्ड किया जाता है उसके अमाउंट से रिड्यूस या सेट ऑफ कर दिया जाता है. Am I clear to everyone? Am I clear to everyone? Then coming to the other procedure here, power to award the interim compensation during appeals. अब यहाँ पे आपके कन्विक्शन हो गया accused का, he has went in appeal to the court of session. अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब अगर यहाँ पे अपील पे जा रहा है, अगर मान लो accused का कन्विक्शन हो गया है, तो अपील की स्टेज में भी if the court wants, it can direct the appellant to deposit the 20% of the amount of fine or compensation awarded by the trial court with the complainant. And this interim compensation, always remember guys, this interim compensation shall be in addition to the amount of compensation awarded by the trial court. Just a second, Vedha. Yes. Now this interim compensation will always be in addition to the amount of compensation जो 20% का नीचे ट्रायल कोर्ट के समय देने के लिए बोला गया था उसके एडिशन में होगा. तो ये एक्यूज कभी नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने इतना अमाउंट नीचे दिया तो उस अमाउंट से कम होना चाहिए. नहीं, आपने अपील करी है तो जितना अमाउंट कोर्ट ने अवार्ड किया है कि आपको कंप्लेनेंट को देना है तो उसका एटलीस्ट अपील अगर आपकी सुनी जानी है तो ऐसी कंडीशन लगा सकता है कोर्ट कि आपको 20% ऑफ द अमाउंट कंप्लेनेंट को पे करना पड़ेगा, जितना कोर्ट ने अवार्ड करने, जितना कोर्ट ने आपको डायरेक्ट किया है, ट्रायल कोर्ट ने डायरेक्ट किया आपको पेमेंट करने के लिए. एंड इस अमाउंट को भी आपको या तो 60 डेज में देना है या एट द मैक्स इसकी डेट 30 डेज और हम बढ़ा सकते हैं. एंड इन केस ऑफ एक्विटल, तो अगर मान लो एक्यूज का एक्विटल हो जाता है तो कंप्लेनेंट को ये डायरेक्शन होंगे कोर्ट की तरफ से कि जो भी पैसा आपको ट्रायल कोर्ट में और अपील स्टेज में इंटरिम कॉम्पेंसेशन के तौर पे मिला था वो सारा का सारा पैसा आप एक्यूज को लौटा दें. Also section 147 says कि दिस ऑफेंस इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, मतलब इसको हम 320 के अंदर कंपाउंड कर सकते हैं. मतलब अगर मान लो जजमेंट से पहले कंप्लेनेंट एंड एक्यूज अगर किसी सहमति किसी नेगोशिएशन में आ जाते हैं to end the trial, to end the prosecution, तो ऐसा किया जा सकता है on making the payment. Now there are certain rules of evidences which we need to remember. One of the rules of evidence is given in section 139, which means that which states that in case of check dishonor, the court shall presume, or to say the court considers this fact to be proved and starts the trial with the fact that the check was issued for the discharge of any debt or liability. मतलब ये कि अगर चेक डिसऑनर का केस अगर कोर्ट के सामने आता है तो 139 ये बोलता है कि इट शैल ऑलवेज बी प्रिज्यूम्ड दैट दिस चेक वाज इशूड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी. शैल प्रिज्यूम का मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में मतलब होता है कि कोर्ट कंसीडर दिस फैक्ट एज टू बी प्रूव्ड. अब कोर्ट इस फैक्ट को प्रूव्ड मानता है, मतलब ये कि अगर पहले से ही शैल प्रिज्यूम की धारणा कोर्ट ने चेक डिसऑनर के केस से बना ली है कि दिस चेक वाज इशूड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी, तो कोर्ट इस धारणा के साथ अब ट्रायल को चालू करेगा. नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन द एक्यूज्ड टू डिस्चार्ज दिस बर्डन. उसको ये साबित करना पड़ेगा कि दिस चेक वाज नॉट इशूड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी. नाउ से फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन के लिए चेक लिखा था तो इट वाज नॉट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी. नाउ इफ दिस चेक गेट्स डिसऑनर्ड एंड द charitable institution institutes a complaint against me under section 138 of the NI Act, then what I have to prove? I have to prove that I issued this check. I issued this check for the purpose of donation to this particular charitable institution. It was not for the discharge of any debt or liability. मैंने कोई इनसे उधार नहीं लिया था जिसको पेमेंट करने के लिए मैंने इनको चेक पेमेंट किया. तो ये बर्डन मेरे ऊपर होगा. अगर मैं इसको साबित नहीं कर पाया कि वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन था और मैं डोनेशन के नाम पे इसको चेक दिया था, अगर मैं इस तथ्य को साबित नहीं कर पाया तो 139 में का जो प्रिजम्पशन है मेरे अगेंस्ट वो बना रहेगा और कोर्ट को ये लगेगा कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की तरफ मेरी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी थी जिसको पे ऑफ करने के लिए मैंने चेक इशू किया था जो डिसऑनर हो गया और उस अपराध के लिए आई एम लायबल. पहली चीज ये हो गई. सेक्शन 140 ये बोलता है द एक्यूज्ड कैन नॉट टेक अप दिस डिफेंस दैट ही डिड नॉट नो दैट एट द टाइम ऑफ द इशूइंग ऑफ द चेक the check will get dishonored when it will be presented to the bank for payment. तो अक्यूज ये डिफेंस नहीं ले सकता अपने प्रोसिक्यूशन या ट्रायल के समय कि जिस समय मैंने चेक को इशू किया था मुझे नहीं पता था कि जब इसको कंप्लेनेंट या होल्डर जो है जब इस चेक को बैंक में लगाएगा तो ये चेक डिसऑनर हो जाएगा. ये डिफेंस इज नॉट परमिटेड अंडर सेक्शन 140 फॉर द एक्यूज्ड टू बी टेकन अप. एंड 145 ये बोलता है कि कंप्लेंट जब फाइल की जाती है चेक डिसऑनर की तब उसमें जो कंप्लेनेंट होता है उसका जो एविडेंस है उसको हम 145 के एफिडेविट के बेसिस पे भी हम ले सकते हैं. मतलब 145 के अंदर जो एफिडेविट कंप्लेनेंट दे रहा है उसको हम चीफ एग्जामिनेशन के तौर पे उसकी टेस्टिमनी के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं. बट अगर कोर्ट को लगता है या अगर मान लो प्रोसिक्यूशन ने या अक्यूज ने
एप्लीकेशन दिया है कोर्ट को, तब कोर्ट को उस व्यक्ति को, कंप्लेनेंट को बुलाना पड़ेगा विद रिगार्ड टू टेस्टिफाई विद रिगार्ड टू ऑल द फैक्ट्स व्हिच हैव मेंशन्ड इन दिस एफिडेविट अंडर सेक्शन 145। अगर मान लो नहीं बुलाते हैं, अगर मान लो उसका एग्जामिन करने के लिए एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूशन नहीं बुलाता है, तो 145 का उसका एविडेंस अपने आप में सफिशिएंट रहेगा। कंप्लेनेंट को अलग से चीफ एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में आने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। 146 ये बोलता है कि चेक डिसऑनर के लिए क्या एविडेंस सफिशिएंट है। तो मान लीजिए चेक जब डिसऑनर होता है तो मुझे एक स्लिप मिलेगी बैंक से विच विल स्टेट कि आपने जो ये चेक लगाया था वो इनसफिशिएंट फंड होने के कारण या क्रेडिट अरेंजमेंट इनसफिशिएंट होने के कारण डिसऑनर हो गया है। तो दिस इटसेल्फ विल बी अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट। अब इसके अलावा मुझे और कोई सबूत लाने की जरूरत नहीं है। दिस स्लिप issued from the bank itself will be the proof of the fact that yes, there has been a check dishonor and the court will draw presumption about the fact of check dishonor. So इसके बाद 139 का presumption बनाया जाएगा by the court कि yes, this check was issued for the discharge of any debt or liability. Now the accused will be called upon and the accused will have to issue a defense. He will have to prove his defense that this check was not issued for discharge of any debt or liability. Is this point clear to everyone? So with this, we complete our law on check dishonor. We complete our law on check dishonor. I hope this session, information was useful. I would request every one of you who has attended, who has watched this session, watched these slides, my lecture on it. अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं. So I open the session for everyone to ask the questions. Yes, the session is open for everyone to ask the questions. In case if you want to, you can ask the questions. You're welcome, Sama. Do you have any questions? Do you have any question? Yes, now I open the session for everyone to ask the question in case if you have it. The session is open for everyone. In case if you want to ask any doubt, you can ask it Abhi. And this is an open session for everyone, so you can ask your doubt with regard to law of check dishonor from your examination point of view, from your course point of view, which you are studying in the college, or from the practical perspective, in case if you are a practicing lawyer. So the session is open, guys. Okay, so it seems that there is no doubt. I hope this session was very informative for you all, and we are going to start with a new batch of civil judge examination preparation with the law of torts on from Wednesday onwards. So those who are interested can contact the Rostrum Legal for more details with regard to the registration. It was nice interacting with you all. I wish you all a very good luck in all your endeavors. Thanking you all. Wishing you all a very good day. Thank you.